हे गाइस। तो चलिए आगे पढ़ने चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो हम लोग कहाँ पे थे? साइंस जो होता है ऑक्यूलर सिकर्टिशियल पैम्फिगॉइड। पैम्फिगॉइड एक डिजीज होता है, स्किन डिजीज में आता है। प्रीवियसली समटाइम्स नोन एज बिनाइन म्यूकस मेम्ब्रेनस पैम्फिगॉइड। दिस इज अ रेयर बट वेरी सीरियस डिजीज ऑफ अननोन ऑरिजिन अफेक्टिंग बोथ आई। अननोन ऑरिजिन का होता है। इट जनरली अफेक्ट्स ओल्डर देन 50 years एंड इट इज़ ऑफ इंसीडियस यानी क्रॉनिक ऑनसेट। ठीक है। Then, with the remission and exasperation, there is a loss of hemidesmosome attachment of the epithelium to the basement membrane. Symptoms include foreign body sensation, redness, watering, photophobia. Signs: vesicles occur on the conjunctiva, but more commonly grayish white Hi, mummy. Grayish white membranous patches are seen. So, progressive cicatrization follows, eventually leading to essential shrinkage of the conjunctiva. So, सिकेटराइजेशन होता है, मतलब हीलिंग होगा, देन कंजंक्टिवा जो है वो श्रिंक कर जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंफीरियर symblepharon, then sallowing of the inferior fornix, severe dry eye, superficial punctate keratopathy, देन एंट्रोपियन हो जाएगा, ट्राइकियासिस, पैनस, केराटाइजेशन एंड कंसिक्वेंट ओपेसिफिकेशन ऑफ द कॉर्निया। इतना सारे क्लिनिकल सिम्टम्स होगा। देन सिमिलर लीजन्स मे बी फाउंड इन द नोज, माउथ, palate, pharynx, esophagus, anus, vagina, urethra, and more rarely on the skin. Somewhat similar lesion may Vladimir Putin. Hello, Vladimir Putin. Hello, Explore with Wasim. Hello, Ashish. Hi, everyone. Somewhat similar lesion may complicate other affections of the mucous membrane, such as erythema nodosum, dermatitis herpetiformis, then epidermolysis. हाय गाइस। सो गाइस, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे मेरे चैनल को, देन इट विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर मी। सो देन हाइड्रोवा वैक्सीनिफॉर्म। सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है, मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस विद स्कारिंग, सीवियर बर्न, एटोपिक VKC, रेडिएशन एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कैन प्रोड्यूस सिमिलर क्लिनिकल पिक्चर्स। ठीक है। तो हम लोग इस किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑक्यूलर सिकेटराइजेशन पैम्फिगॉइड। पैम्फिगॉइड एक डिजीज़ होता है जिसमें क्या होता है कि जो हेमीडेस्मोसोम्स होता है ना स्किन का, एपिथीलियम का, वो लॉस हो जाता है। हाय मम्मी। सो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करेंगे? सो द डायग्नोसिस इज मेड बाय कंजंक्टिवल बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी लेंगे कंजंक्टिवा का। हाय गाइस। गाइस, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बायोप्सी लेंगे कंजंक्टिवा का, यानी आँख की कंजंक्टिवा का हम लोग बायोप्सी लेंगे। एंड देन फॉर इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेनिंग एंड डर्मेटोलॉजिकल, ओटोराइनोलॉजिकल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन. Now, management, depending on the severity of the involvement, treatment is with artificial tears, protective mature retaining glasses, then punctal occlusion, then we have topical and systemic steroid, then dapsone, immunosuppressive,
सो क्या क्या है, आर्टिफिशियल टीयर्स होता है, देन प्रोटेक्टिव moisture retaining glasses, then we have punctal occlusion, then topical and systemic steroid देंगे, dapsone देंगे, immunosuppressives देंगे, immunosuppressive therapy, surgery by mucous membrane graft and keratoprosthesis at the end stage of corneal disease. So So what happens? Ki local treatment such as transplantation of the mucous membrane is disappointing, as is general treatment. मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं होता है लोकल ट्रीटमेंट, जैसे ट्रांसप्लांटेशन और एवरीथिंग डिसअपॉइंटिंग होता है, as is general treatment. Hydrophilic cataract lenses together with artificial tear may be helpful. ना हम लोग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम देख लेते हैं, जिसका नाम एरिथमा मल्टीफॉर्मिस मेजर होता है. सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में होता क्या है? दिस इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यूजुअली ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन टू ड्रग्स जैसे कि सल्फोनामाइड्स, एनसेड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल्स, एंटी एपिलेप्टिक्स सच एज बार्बिट्यूरेट्स एंड फेनाटोइंस. अगर ये सब ड्रग्स से हाइपर सेंसिटिविटी है तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, राइट? देन वी हैव और सिस्टमिक इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड सम फंजाई. ठीक है, इन सब से सिस्टमिक इन्फेक्शन. सो इट इज़ अ सीरियस डिजीज विच इज़ फेटल इन सम पेशेंट्स and characterized by skin rash, erythematous lesion, followed by bullae and epidermal necrosis, fever, malaise, and ulcerative lesion of the mucosal membrane, particularly of the mouth and the eye. Late ocular sequelae include severe dry eye, symblepharon, lid deformity, cicatricial entropion, corneal vascularization, scarring. ये सब हो जाता है बाद में. क्या क्या स्टीवन जॉनसन से? स्किन रैश तो होता ही है, बुले फॉर्म होता है, नेक्रोसिस होता है एपिडर्मल का, फीवर, मलाइस, अल्सरेटिव लीशन, ये सब होता है. फिर क्या होता है? सीवियर ड्राई आई हो सकता है, सिम्ब्लेफेरॉन हो सकता है, लिड का डिफॉर्मिटी होगा, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन होने लग जाएगा, स्कारिंग हो जाएगा. ऑक्यूलर ट्रीटमेंट इन अक्यूट स्टेजेस इंक्लूड supportive therapy with topical lubricants, antibiotics to prevent secondary bacterial infections, lysis of adhesions formed between the bulbar and the palpebral conjunctiva by passing a glass rod coated with antibiotics or plain paraffin ointment in the fornices. Late cicatricial stage can be treated medically to control the manifestation of dry eye and lid deformities. Can be surgically corrected. Additional measures such as punctal occlusion, transplantation of conjunctival and buccal mucosa membrane, and transplantation of the limbal stem cells with amniotic membrane to promote healing may be needed to restore the integrity of damaged ocular surface. So then we have ocular rosacea. See chapter 12, diseases of the cornea. Okay, so we are done with this. Then we have toxic and chemical conjunctivitis. तो ये क्या होता है toxic and chemical conjunctivitis? So basically certain chemicals and toxins including drugs such as neomycin, gentamicin, edoxuridine, trifluorothiamidine drops, preservatives in drops such as benzalkonium chloride and thiomersal, and prolonged topical use of acerine, pilocarpine, and phosphatidine iodine can produce follicular hypertrophy.
ठीक है, फॉलिकुलर हाइपरट्रॉफी प्रोड्यूस करेगा. द मैकेनिज्म इज बिलीव्ड टू बी टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. Now, other drugs reaction mimicking conjunctivitis include allergic blepharoconjunctivitis, brimonidine, reactive hyper uh, latanoprost, and rebound hyperemia के लिए एफिनेफ्रिन, डाइपेफ्रिन एंड ये सब भी दे सकते हैं. अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिक फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कैन अकर आफ्टर एक्सपोजर टू अदर फॉरेन सब्सटेंस सच एज कॉस्मेटिक्स applied around the eyes. Now, Felthrius pubis uh, infestation along with the lashes and pox virus, molluscum contagiosum infection of the lid margin. Now we have viral protein and other related substance come in contact with conjunctiva and lead to toxic reaction. So traumatic conjunctivitis क्या होता है? Will be considered with ocular injuries when the action of chemical and vesicant gases will be discussed. Now malingerers sometimes induce conjunctivitis by inserting a multitude of irritant to the eye. The irritation is most marked in the lower fornix. Usually the right eye is affected in the right-handed person. Non-specific chronic conjunctivitis क्या होता है? So we have a non-specific chronic conjunctivitis may sometimes occur as a continuation of a simple acute conjunctivitis in spite of conventional treatment. It is frequent when the eye is exposed to chronic irritation जैसे कि smoke, dust, heat, bad air, late hours and alcohol abuse, or when it is caused by hypersensitivity to allergen which has not been eliminated. Permanent irritation from the concentration, example concentration lithiasis discussed later in this chapter, is the in the palpebral conjunctiva. Misplaced lashes, dactylocystitis, chronic rhinitis and other possible causes. Unilateral chronic conjunctivitis should, hi mummy, should suggest the presence of foreign body retained in the fornix or inflammation of the lacrimal sac. So it is often necessary to make a thorough and systemic investigation of the local and general condition before the cause can be found. It is not infrequently associated with chronic rhinitis or sinusitis, blepharitis, seborrhea, particularly of the scalp dandruff, and is common accompaniment. The disease, although frequently regarded as trivial, may be a source of great discomfort. So symptoms क्या है? So burning and grittiness, especially in the evening. क्या नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस जो कि डस्ट वस्ट की वजह से होता है उसका सिम्टम्स क्या? बर्निंग और ग्रिटीनेस होगा शाम के वक्त. व्हेन द आई ऑफन बिकम रेड वाइल द एजेस ऑफ द लिड जो है वो फील हॉट एंड ड्राई. नाउ द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन कीपिंग द आई ओपन इज अ कॉमन सिम्टम. Right. The lid may or may not be stuck together on washing as the discharge is slight, but there is frequently an abnormal amount of secretion from the meibomian gland. Now, what are the signs? So, superficially, the eye may look normal, but when the lower lid is pulled down, the posterior conjunctival vessels are seen to be congested, and the surface of the mucous membrane is sticky. साइंस मतलब हम लोग अगर देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? नॉर्मल आई दिख रहा है, बट जो लोअर लिड है ना जब उसको नीचे किए तो पोस्टीरियर कंजंक्टाइवल वेसल जो है वो सब कंजेस्टेड दिखेगा और म्यूकस मेम्ब्रेन
स्टिकी दिखेगा. The upper and lower palpebral conjunctiva may be congested with a velvety papilliform roughness. This is due to hypertrophy of normal vascularization papillae in the submucosa. Occasionally, it is succulent and fleshy. So, what is the treatment? This consists of eliminating the cause and restoring the conjunctiva to its normal condition. Chronic nasal catarrh is perhaps most likely to be overlooked when heat is a prominent etiological factor, as in cooks or in industrial worker. Protective glasses may be ordered. A swab should be taken to eliminate the presence of infective organism, and at the same time the bacteriological flora of the nose and upper respiratory passage should be determined. Any conjunctival or nasal infection should receive the proper treatment. Now we have local treatment consists of first eliminating any infection by a short course of suitable antibiotics, and then diminishing congestion and restoring the normal suppleness and secretory activity of the conjunctiva. When there is an abnormal amount of secretion from the tarsal glands, conjunctivitis, mebomania, this should be squeezed out of the gland by warm compression followed by repeated massage of the lid. So now we have degenerative changes in the conjunctiva, जिसमें कंक्रीशंस आएगा यानी लिथियासिस, पिंगक्यूला आ जाएगा, टेरिजियम आ जाएगा, या यही तीन आएगा. सो कंक्रीशंस क्या होता है? लिथियासिस. So these occur as minute hard yellow spot in the palpebral conjunctiva. Etiology: concretions are formed due to accumulation of epithelial cell and inspissated mucus in the depression called Henne's gland. Henne's gland में epithelium जो है वो accumulate करता है, उससे concretions होता है. Foreign body sensations are as concretions can be so hard that when they project from the surface, cornea is scratched. They are common in elderly people who suffer from trachoma. Treatment क्या है? Remove with a sharp needle. Note the term is a misnomer, as they never become calcaneous. सो लेट्स मूव ऑन टू पिंगेक्यूला. पिंगेक्यूला क्या होता है? एक फैट टाइप का डिपॉजिट होता है, बट इट्स नॉट फैट. इट इज़ नॉट फैट, इट इज़ समथिंग एल्स. एक ट्रायंगुलर पैच होता है जिसका एपेक्स जो होता है अवे फ्रॉम कॉर्निया होता है. सो अ ट्रायंगुलर पैच ऑन द कंजंक्टिवा. ईटियोलॉजी क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू हाईलाइन इन्फिल्ट्रेशन. सो ये हाईलाइन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से होता है. Elastotic degeneration of the submucosal tissue. Now features क्या होता है? It is usually found in elderly people. जो पिंगेक्यूला elderly people में पाया जाता है. Hyaline infiltrate and elastotic degeneration होता है, especially those who are exposed to strong sunlight, dust and wind. Now it occurs near the limbus in the palpebral aperture, the apex of the triangle being away from the cornea, and affects the nasal side first and then the temporal. So first nasal side is affected and then the temporal. So it is yellow and looks like fat. Fat की तरह दिखता है, yellow color का होता है. Hence the name pinguous fat.
Because the pingacula remains relatively free from congestion, it is particularly conspicuous when the eye is inflamed. जब eye inflamed होता है तब वो दिखता है. Mistakes in diagnosis may then occur. It requires no treatment. So pterygium क्या होता है? So pterygium meaning a wing. Pterygium मतलब क्या होता है? Wing होता है. It is a triangular encroachment of the vascularized granulation tissue covered by conjunctiva in the interpalpebral area. Etiopathogenesis क्या था? It is a degenerative condition of the subconjunctival tissue which proliferates as avascularized granulation tissue encroaching upon the cornea and destroying the superficial layer of the stroma and Bowman's membrane. It is characterized by opacity lying deep in the neighboring part of the cornea in front of its blunt apex. The lesion thus appears as thick vascularized conjunctiva growing into the cornea from the canthus and is loosely adherent in its whole length to the sclera. The area uh, the area of the adherence being always smaller than its breadth, so that there are folds at the upper and lower border. स्क्लेरा को पकड़ा हुआ है, पर स्क्लेरा का जो पकड़ा है ना कम है, जितना दिख रहा है उससे कम है. सो क्या होता है कि folds होता है at the upper and lower border. Formation of dense fibrous tissue leads to the development of considerable corneal astigmatism. The condition is common in dry, sunny climate with sandy soil, as in parts of Australia, South Africa, Texas, and Middle East, and South and Southeast Asia. Hello, uncle. Ultraviolet light is probably an etiological factor. So pterygium होने का रिस्क फैक्टर क्या है? तो अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट जो होता है वो होता है. ड्राई सनी क्लाइमेट में और सैंडी सॉइल में बहुत कॉमन होता है. Corneal astigmatism cause करता है. So this is what pterygium looks like. So it is triangular in shape. Apex जो है cornea की तरफ है, adherent to the sclera. This is degenerative avascular conjunctiva which is encroaching the cornea. So clinical feature क्या होता है? Pterygium frequently follows a pingacula. इट इज़ ऑफन बाईलैटरल, दोनों आँखों में होता है. यूजुअली प्रेजेंट ऑन नेजल साइड, नाक के साइड में होता है. विजन बिकम इम्पेयर्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिव ड्यू टू द pupillary area of the cornea. Now what happens is it induces astigmatism with through the effect of corneal फ्लैटनिंग. कॉर्निया जो है वो फ्लैट भी हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा. कॉर्निया फ्लैट होगा तो इन द एक्सिस ऑफ द टेरिजियम. क्लिनिकली इट अपीयर्स थिक एंड वैस्कुलर इन द अर्ली स्टेजेस बट बिकम्स थिन, pale and atrophic in the later stages when it ceases to grow but never disappears. Limbal stem cells? No, I am reading pterygium. So pterygium क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है. एज यू कैन सी इट इन दिस, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है pterygium जो होता है. एंड ये कंजंक्टाइवा का एक्सटेंशन की तरह होता है. ये स्क्लेरा को एडहेरेंट पकड़ के रखता है. देन पेशेंट को क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्निया है
इसको फ्लैट करते जा रहा है, कॉर्निया फ्लैट होते जाएगा, पेशेंट एस्टिग्मेटिज्म होने लगेगा, देन कॉर्निया, देन इसके प्यूपिल को इंक्रोच करते करते इसको लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर शुरू का स्टेज में देखेंगे तो थिक दिखता है, वैस्कुलराइज दिखता है, बट बाद के स्टेज में देखेंगे तो ये थिन, पेल और एट्रोफिक दिखता है, ग्रो करना बंद कर देता है। यूजुअली दोनों आँख में होता है और नेजल साइड में होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? सूडोटेरिजियम डिफरेंशियल हो सकता है, विच इज़ इन फैक्ट अ टेरिजियम लाइक लीजन, इट इंड्यूस्ड बाय सिकेटराइजेशन, conjunctival inflammatory overgrowth, produced by trauma, thermochemical burns and chronic conjunctivitis. So this is pseudoteritium. ये ट्रॉमा या थर्मोकेमिकल बर्न या फिर क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस से होता है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर, और ये जो है ना, ये टेरिजियम जो है वो यूवी लाइट से होता है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर इंक्लूड्स अ नॉन प्रोग्रेसिव नेचर। सो टेरिजियम जो है वो प्रोग्रेस करता है, बट ये जो सूडो टेरिजियम है वो नॉन प्रोग्रेसिव होता है। लोकेशन उसका अलग होता है, एट एनी क्वाड्रेंट ऑफ द कॉर्नियल लिम्बस, एंड नॉट नेसेसरीली बीइंग नेजल, नेजल होने का ज़रूरत नहीं है, एंड अपीयरेंस विथ adhesion to the adjacent lid and scar tissue anchoring the lesion to the underlying surface, unlike a true pterygium beneath which a probe can be passed at the edge. So इसके ये जो टेरिजियम है, टेरिजियम के अंदर से कोई प्रोब नहीं पास कर सकते क्योंकि पूरा एडहेशन है, लिड में भी अंदर इधर भी। पर टेरिजियम जो होता है ना, उसके अंदर से ऐसे लिड पास कर सकते हैं एज से, एटलीस्ट एज से तो कर ही सकते हैं क्योंकि एज में चिपका हुआ नहीं रहता है। सो ट्रीटमेंट क्या होता है टेरिजियम का? अ टेरिजियम इज बेस्ट लेफ्ट अलोन अनलेस इट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द प्यूपिलरी एरिया कॉजिंग एक्सेसिव एस्टिग्मेटिज्म, restriction of ocular mobility or disfiguring ocular mobility and is disfiguring. Removal leaves a superficial corneal scar. अगर रिमूव करेंगे तब भी स्कार हो जाएगा। अब ये देखते हैं, रिकरेंस ऑफ टेरिजियम आफ्टर सर्जरी विथ को इंसिडेंटल आर्कस सेनाइलिस। देख सकते हैं कि आर्कस सेनाइलिस हो रखा है और ये टेरिजियम रीअकर कर रहा है, और देख सकते हैं कितना सारा ब्लड सप्लाई है। So we have so this is टेरिजियम का सर्जरी। आगे पढ़ लेते हैं। सो रिमूवल लीव्स अ सुपरफिशियल कॉर्नियल स्कार विच कैन later be treated by photorefractory keratectomy or limbal corneal graft if involving visual axis. So removal is carried out by grasping the neck near the corneal margin. So this is the pterygium excision leaving an area of bare sclera. So यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्क्लेरा, स्क्लेरा यानी वाइट पोर्शन का बेयर एरिया को लीव कर दे रहे हैं। सो क्या है? ग्रास्पिंग द नेक ऑफ द कॉर्नियल मार्जिन with fixed forceps, raising it and shaving and dissecting it from the cornea. इसको रेज करेंगे, डिसेक्ट करेंगे कॉर्निया से, स्टार्टिंग फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से स्टार्ट करेंगे। केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू गो टू डीप नहीं जाना है। द टेरिजियम इज फ्रीड फ्रॉम द स्क्लेरा फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स द कैंथस. Two parallel incisions are then made with scissors to excise as much of the pterygium as possible. The head of the pterygium is then excised and a bare area of sclera remains at the edge of the corner. Hi, mummy. So what happens is a pterygium sometimes reoccur. So this is what excision leaving an area of bare sclera, and this is autoconjunctival
Graft, yes, placed over the conjunctival defect. Okay, so let me just complete this one, then I'll go and then after some time raising it shaving karna hai, then care must be taken not to go too deep. The pterygium is freed from the sclera for approximately half of the distance towards the canthus. Two parallel incisions are then made with a scissor to excise as much of the pterygium as possible. The head of the pterygium is then excised and bare area of the sclera remains at the edge of the cornea. So, a pterygium sometimes reoccur after removal. Post-operative therapy with mitomycin C drops have been tried, but serious complications such as scleral necrosis, um, cataract, and iriditis have been reported. The most effective method of preventing reoccurrence is to perform an autoconjunctival graft, taking piece of limbal conjunctival tissue from the same graft or the other eye and securing it to the limbus over the bare area to cover the defect, producing the excision of the pterygium with application of the fibrin glue and absorbable sutures. Okay, guys, I'm taking a 5 minute rest.